begin from the beginning. When we begin on a piece of paper, which is just white paper and a pen. And we write the first line of the film, which begins with fade in. In case of Wazir, it was like faded, and the first line we wrote that it's raining and Danish Ali meets Ruhana. It's a very scary state, very scary. And at this moment, all of us, Abhijat, Raju, are going through the same state with the next film. It's scary. You have one piece of paper, you have one pen, you write one line, and you don't know how to follow it up. I had asked a great filmmaker, Akhtar once, how you write a script, and he said, fade in, write, fade out. Then he spoke in Japanese, which was the translator said, that's the only way you can write. So today, this little function we are dedicating to the writers who are really the backbone of the film. Of course, we see stars who do great job. We have the stars here, we have directors here, we have, music people here, but the backbone is really the screenplay. If the screenplay is good, even a bad director cannot make a bad film. But if it's a bad screenplay, the best director, the best actor cannot make a good film. So this is dedicated to the writers today, and I would like to call my fellow writers Abhijat Joshi and Raju Hirani on stage to take this further. To introduce to you one of the finest writers in the film industry ever, who's present with us, whose name came before the name of any director or the actor. And I'm referring to Javed Saab, I'm very grateful he's here to represent this idea of a writer. And I'd like to now call Abhijat and Raju to take this further. Thank you. It's a little emotional to be standing here. This film is special for me because the seed of the idea for this film, Vinod told me the day I first met him. It was not to happen for many years, many years, more than a decade after that. But he told me about two chess players and the thriller around it, that far back in time. And then we attempted an English language film for 4 years called 64 Squares. And my learning in cinema, in screenwriting, I would say happened through that process of scripting. Vinod was my mentor through that process. And at the end of it, though that film could not happen at that time, it had equipped me, I believe, to be able to write Lagero Munna Bhai, because Raju read that script and trusted me after a few mishaps, I have to admit, but trusted me to write Lagero Munna Bhai with him. So this film is truly special for me. I still call Alexia, which is based on the name of the character in the English film that we are attempting. Someday we'll make it, that film also. And it's a double blessing today because Javed Saab is here. Like Ekalavya, I think all writers from in India must have learned their craft from him and Salim Saab. He's clearly the wittiest man I've ever met in my life. We used to hear the stories of Birbal, Oscar Wilde, Bernard Shaw. Sometimes we do not recognize that a Bernard Shaw or an Oscar Wilde is among us. And it's irritating that when we only hear about Coppola's and Scorsese's, we do not recognize talents of even greater dimension just because they are close to us. Javed Saab, I cannot tell you how much we have learned from you, and it's a real privilege, sir, that I'm able to say that to you in person today.
Thank you, sir, for coming. नमस्कार। राइटर्स की बात निकली है तो मुझे याद है कि एल्फ्रेड हिचकॉक से एक बार किसी ने पूछा था कि आपने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं, कामयाब फिल्में भी बनाई हैं, आपका रहस्य क्या है, आपका गुरु मंत्र क्या है एक अच्छी फिल्म लिखने का, एक अच्छी फिल्म बनाने का? तो उन्होंने कहा था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। दूसरी बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। और तीसरी बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। तो आई एम हैप्पी हियर टुडे दैट इस फिल्म से काफी राइटर्स जुड़े हुए हैं। फरहान हिमसेल्फ इज अ राइटर जो इस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, अभिजात विनोद जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, और सबसे खुशी की बात है कि जावेद साहब आज यहाँ हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने आई थिंक जो हिचकॉक एल्फ्रेड हिचकॉक की कही हुई बात है उसको इस खूबसूरती से अपनाया है। यानी मुझे नहीं लगता कि हम एक कामयाब फिल्म कहते हैं, हम एक फिल्म जो ज्यादा बिजनेस करती कहती है कि बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है, पर मुझे लगता है सक्सेसफुल फिल्म होती है जो जहन में घुस जाए। आप देखिए 40 साल पुरानी फिल्में जावेद साहब की, हम आज भी उनके डायलॉग बोलते हैं। मुझे नहीं लगता बाकी आती जावेद साहब ने उस वक्त लिखते हुए सोचा होगा कि कोई 40 साल बाद आज कहेगा मेरे पास माँ है। तो हम कहेंगे आज हमारे पास, आई कंप्लीटली अग्री जो अभिजात ने कहा कि हम जब 10 बार अटकते हैं कहीं स्क्रिप्ट में, हम याद करते हैं और सोचते हैं कि जावेद साहब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम पुरानी फिल्में निकाल के इनकी देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे इन्होंने ड्रामा एनहांस किया, कैसे हर चीज को हैंडल किया, कैसे डायलॉग्स लिखे। वो तो आज भी हम मिलते हैं तो बस मैं तो हंसता रहता हूं उनको मिलकर, सिर्फ इज एक्चुअली, मैं कहता हूं कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी चाहिए लिखने के अलावा। तो आई एम हैप्पी इज हियर, और आई थिंक हम सब कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास जावेद साहब हैं। हमारे पास आई वुड लाइक टू वेलकम जावेद साहब ऑन स्टेज। और जावेद साहब ने एक बहुत कमाल की नज्म लिखी है, इस जो ये पढ़ेंगे आज, जो नज्म जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये नज्म ही वजीर फिल्म है, जो इन्होंने अभी मुझे सुनाई हाल में ही, मामी के दौरान हम लोग मिले महबूब स्टूडियो में। वो नज्म ही मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये जरूर आज आप सबको ट्रेलर रिलीज करने से पहले ये नज्म आपको जरूर सुनाए। शुक्रिया जावेद साहब। For this very kind and generous compliment, which in all honesty I don't deserve. इस हद तक तो नहीं। ये सही है कि स्क्रीन प्ले एक तरह से कहना चाहिए कि ब्लूप्रिंट होता है फिल्म का, लेकिन जाहिर है कि वो कहते हैं गालिब की ज़बान में, कतरे से गोहर, गोहर यानी मोती, देखें क्या गुजरे है कतरे से गोहर होने तक। तो वो बहुत सारी स्टेज से जाता है, और वो जंजीर ऐसी है कि उसमें कोई भी लिंक अगर वीक हो तो एज दे से इन इंग्लिश, द स्ट्रॉन्गेस्ट चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट वीकेस्ट लिंक। तो वो चाहे डायरेक्टर हो या कैमरामैन हो या एडिटर हो या अल्टीमेटली सेंटर फॉरवर्ड टीम का जो होता है वो एक्टर होता है, जो अल्टीमेटली गोल पास करके उसे दी जाती है डी में और वो किक करता है गोल में। तो कहीं भी अगर कोई कमी हो तो वो कमी दिखाई देती है, और कभी कभी होता है सही टीम बैठ जाती हैं, एक ऐसा प्रोड्यूसर जो तैयार है अच्छी फिल्म बनाने के लिए किसी भी कॉस्ट पे, ज़्यादा नाकतोल के अच्छे काम नहीं होते हैं, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा इरेशनल एटीट्यूड भी चाहिए होता है, जुनून जिसे कहते हैं। एक डायरेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो समझ रहा है और बात को आगे ले जा रहा है, बजाय इसके कि उसे पीछे खींच रहा हो। एक एक्टर, मैं बहुत एक्टर को भी बहुत मानता हूँ। ये ख्याल है, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि दी जाता पपेट्स के भैया आपने उन्हें वर्ड दे दिए, बता दिया जहाँ खड़े होगे वहाँ तक चलोगे, ये मूड है, ये डायलॉग है, बोल दो। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टर हो जो कि कैमरा के सामने नहीं आ रहा, या एक्टर हो जो कैमरा के सामने, उनके एस्थेटिक सेंस क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनकी सेंसिबिलिटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, उनका टेस्ट क्या है लाइफ में, वो सब का सब फिल्म में दिखाई देता है। वो किस क्लास को बिलोंग करता है वो डायरेक्टर। आपको वो फिल्म आप बना रहे हो किसी भी सब्जेक्ट पे, मगर उसके अंदर कोई छोटापन अगर है, कोई मैल है, तो उस फिल्म में दिखेगा। अगर एक्टर जो है उसको आप कोई भी रोल दे दिए लेकिन उसमें सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो नहीं दिखेगा। उसके अंदर सेंस ऑफ डिसेंसी कम है तो वो दिखाई देगा।
ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी डायलॉग उस क्रूडिटी को रोक नहीं पाएगा। तो अच्छी फिल्में जब बनती हैं तो कुछ ऊपर से नीचे तक सही पत्ते बैठ जाते हैं, कभी कभी होता है। मुझे खुशी कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ। बाकी ये कि जहाँ तक ये क्लब का ताल्लुक है, मैं तो ज़िंदगी में कभी कोई मैंने स्क्रीन प्ले पे आज तक किताब नहीं पढ़ी, हाउ टू राइट ए स्क्रीन प्ले, मगर मैंने ज़िंदगी में भी कोई किताब नहीं पढ़ी, हाउ टू लिव हैप्पीली, लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। तो ये यू डोंट लर्न शूटिंग बाय मेल, यू लर्न बाय डूइंग इट। वो ऐसा है कि स्विमिंग तो आपको पूल में उतर के जाती है, उससे पहले सीख लें फिर पूल में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ तक जो यकलब की बात है, यकलब ने तो अंगूठा काट के अपना दे दिया था, मगर ये दोनों तो ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है हर फिल्म मुझे अंगूठा दिखाती है। दे आर मेकिंग सच ब्रिलियंट फिल्म। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसी टीम है, एक बहुत एक्सप्लेनेशन आजकल दी जाती है, देखिए क्या है, बहुत डाइवर्ट हो गई है सोसाइटी। और वो पहले ज़माने में था एक कुछ कॉमनैलिटी थी, अब नहीं रही है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल रीजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वक्त एक फिल्म बनाना जो क्रॉस सेक्शन सोसाइटी को लगे ठीक मुश्किल है। कई बड़े शहरों में हमारा एस्थेटिक सेंस और हमारी सेंसिबिलिटी उनसे मैच करती है। अब हमें क्या मालूम, छोटे शहर में लोग अलग ही सोच रहे हैं। ये सब बहाने हैं, और इन बहानों में कितना दम नहीं है इसका सबूत इन लोगों की फिल्में हैं। ये भी तो इसी वक्त में फिल्म बना रहे हैं। क्या वजह है कि इनकी फिल्म क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपील करती है, वो चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे बहुत ही लेमैन हो। वो फिल्में जो हैं, चाहे थ्री इडियट्स हो या जो पन्ना भाई की फिल्में हो, किस तरह से इन सम वे पीपल हैव दे आर ऑन द सेम पेज विद द होल सोसाइटी, एंड इफ आई मे से सो दे आर द ओनली वन। तो ये तो बहुत इज्जत की बात है। मैं तो ये मुझसे कह रहे हैं कि इन्होंने मुझसे सीखा है, शायद कभी सीखा होगा, लेकिन अब तो वक्त ये है कि मैं इसे सीखूं, और ज़रूरी है। वो कोई भी जनरेशन जो अपनी अगली जनरेशन से नहीं सीख सकती, वो ऑब्सोलीट हो जाती है। ये ख्याल कि मैं किसी से पहले पैदा हुआ हूँ इसलिए मुझ में ज़्यादा अकल है, तो फिर ये मुझे मानना पड़ेगा कि जितने लोग मुझसे पहले पैदा हुए थे उनमें मुझसे ज़्यादा अकल है, और ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये तो इन ऑल ह्यूमिलिटी वन विल हैव टू एक्सेप्ट दैट today's generation has certain sensibility which we borrow from them or learn from them, that will be a wisdom. तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजारूँ। अभी फिर कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन के लिए ले जाऊँ, देखिए कामयाब होता हूँ कि नहीं। और बहुत मुबारकबाद। मैंने इसके विदु जी was kind enough to show me some 10-15 minutes of this film. अगर बाकी फिल्म उसकी 1/4 भी अच्छी है तो भाई कमाल की फिल्म है। जो सो ब्रिलियंट, सो वेल शॉट। जो कहाँ हमारे डायरेक्टर साहब कहाँ बैठे हैं, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, योर वर्क इज ब्रिलियंट, और कमाल कर दिया आपने। बाकी बातें बाद में करनी है। तो बहुत उम्दा। और फरहान और लेडी की बहुत अच्छा सबका ही काम था। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे यकीन है, ऐसा वो कहते हैं कि जो हांडी का एक ही चावल देखा जाता है कि गली के नहीं गली, ये हांडी गली हुई है। तो मुझे पॉइंट करना है दैट वी आर वेटिंग फॉर एन एक्सेप्शनली गुड फिल्म दैट विल परहैप्स रिलीज ऑन 8th of December. So let me be the first person to congratulate the team for the success of the film. Thank you. अरे हाँ, ऐसा होता है कि मदारी कहीं जाए तो उसे बिना तमाशे के नहीं छोड़ते, वो तो दिखाना ही पड़ता है। ये एक पोएम है जिसका टाइटल है ये खेल क्या है। तो कहीं पता नहीं कैसे इत्तेफाक से क्या बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि वो चेस पे मैंने 1-2 नज़में जिसमें मेटाफर चेस का लिया है, एक नज़म है, तो मैंने सुनाई विदु जी को, इन्हें बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फ़ौरन रिकॉर्ड कर ली। फिर उनका ये कहा कि भाई ये तो ऐसी है कि जैसे लगता है कि मेरी फिल्म की कहानी आपने इसमें लिखी है। तो चलिए जो भी है आप सुन लीजिए। इसमें ज़ाहिर है कि बातें तो दूसरी हैं, लेकिन वो चेस की दरिया कहेगी।
ये खेल क्या है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या है, न ये जरूरी न वो है। न अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के है प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे हैं। मगर मैं ऐसा जो मानवी हूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जाए। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। Thank you for having me. Thank you, Vinod sir, for giving me the opportunity to be a part of this wonderful project. What can I say? It was just a boyhood dream that the voice which has actually defined the film industry, Mr. Bachchan. A few years back when I passed out from FTI, to think that I'll be writing the words which Mr. Bachchan will speak, it was just a dream, and thank you, sir, for making this dream come true, not just in terms of the dialogues, but also a poem, a song that I have written. I hope you like it. I hope you like the film. Thank you very much. Thank you. And Ghazal, you want to say? I'm quite unexpectedly here. I mean, with such big names having spoken already, I feel a little nervous being here. This is the first film work of mine that's getting released, and I feel really humbled and privileged and very, very grateful. So, and if I can say it myself, I've seen the film and it's brilliant. So I hope you all, when you watch it, will think likewise. Thank you. Now let me call the director, Bijoy Nambiar, who directed this film. Hi. Before I start, can I just, if you don't mind, sir, can I just request Abhijit to just recite the poem? Since Javed sir is here, it'll be nice to recite the poem. Okay, so it goes like, खेल खेल में खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा, हार जीत से हार जीत के जीत हारना सिखलाएगा, हाल चाल का बेहाल हाल है, चाल चाल नहीं एक सवाल है, एक सवाल के 100 जवाब है, हर सवाल का एक हिसाब है, चाल का ना कोई चाल चलन हो, दोगलापन एक ही नियम हो, खेल खेल में खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा. Rest of it is in the film, so you can. Thanks, Abhijit. I would just like to first of all say that exactly 1 year ago we released the teaser of the film. The first teaser of the film was released exactly 1 year ago when PK had released. And at the risk of sounding immodest, I just want to say that I was confident then, and I'm extremely confident now of the film that we have made. And it's purely because of the fantastic support that I got, first and foremost, from my producer and writer and editor, Mr. Vinod Chopra. So thank you so much, sir, for giving me that opportunity, for giving me all the support, for mentoring me like a child and taking me through this entire procedure. But apart from him, of course,
my other writer, Mr. Abhijat Joshi. Thank you so much, sir, for just being part of this, for being patient with me and helping me through this film. And of course, my fantastic cast. I couldn't have asked for a better cast than what I got. This is my third film, for my third feature, to actually work with someone like Mr. Bachchan, work with Farhan, whose work I've admired for so many, from the time I started my career. So to actually get a chance to work with such a powerhouse of talent, it's like a dream come true. Like he said, it's a boyhood dream to actually get to work with such people. And lastly, I would like to just thank my crew, who just stuck with me through thick and thin. And it's been a long wait. So January 8th, we're finally releasing. We can't change that date anymore. We announced it. So now we are coming on Jan 8th. Let any other film come into, I don't care. So after, I think, let me not take up too much time. I would just like to invite my cast here. Farhan, Aditi, Neil, please come on stage. Sorry, can I just call Anjum also? Anjum, please. Sorry, I missed you. You go first. Hi, good afternoon, everyone. Everyone's got stories around this film. I have my own. I remember Laksh had just released, and I was driving back home. There was a screening that had happened for the industry, and Vidhu also happened to be there, and he had seen it. And then he called me from the car, and he said, "Mujhe first half bahut achhi lagi thi, and the second half." And it's amazing. I mean, since then, since I've known him, I've tremendously appreciated his honesty, regardless of whether it's to himself with his own work or it is to somebody else, like me, who's still learning. And he told me, and he said, there's this one script. I want you to hear the script. So I was like, acha, he's that guy. And I think it was called maybe The Fifth Move or something at that time. Yeah. So he said, it's called The Fifth Move. And I want you to hear that script. And I want your feedback on that screenplay. So I was like, now this is very sweet. He's telling me things, I made a film. And I don't know when I'll meet him and when I'll hear the script and when all this will happen. And then this was in 2004. And then we met in 2014, which is 10 years later. When you called me up and you said, याद है मैंने तेरे को कहा था वो script के बारे में? I'm like, huh? So he's like, 10 साल पहले उस शाम जब तुम घर लौट रहे थे. So I said, oh yeah, I remember. So he said, I want to come and meet you with that. And it was the same script. So it's amazing that how life just came a full circle 10 years later. And I actually got to hear that script for one. And I was blown away. From the moment that you told me about that script, and really kudos to you, to Abhijat, to Abhijit, to everybody who's written this film, to Gayatri. It really, really was a very special script. It moved me from the word go. It's a very emotional film. I mean, I think there's so much focus here, actually in the trailer, on the thrill element, on the action element. But when you really get into watching the film, it moves you deeply, and it makes you think about things, in life that are very, very important. So thank you very much, really, for this wonderful journey of making this film, and of course to work with Bijoy. Bijoy and me have again met in the past over various things, discussed various different scripts, different subjects. I'm really glad that I got to work with him. He's a supremely fine technician, and he's a very, very easy person to work with because he gives you a lot of space to be able to express yourself. So thank you very much for allowing that to happen. Thank you. And of course to the rest of the cast, everybody up here on stage, it's been a pleasure working with all of you. And I think that's really all I'd like to say. Thank you very much. I've had a great time being on this movie. Thank you. Please, Aditi. Good afternoon, and I'm actually quite speechless because I don't think there are enough words to express how I actually feel about this entire experience and this journey. Of one, being chosen for a film like this. I went through various Agni Parikshas and various tests, as Vinod sir is very famous for, which I have heard about. But I'm I feel so privileged that I was picked for this, that they had faith in me, that I could play this lovely girl, Ruhana.
it's been a completely surreal experience. Like everybody is talking about their childhood dreams. For me also, it's been like living a dream where I've constantly pinched myself, been bruised various times. To have been on a set with these amazing people from Vinod sir to Raju sir, Abhijat Joshi, Farhan, Akhtar, who I'm constantly googly-eyed around, Mr. Bachchan, who is just, it would be foolish to even say anything. And of course, this amazing cast, and Vijay, who was the first person who called me and said, will you be a part of this? And I was like, you're asking me? So it's just been amazing, and I really consider myself privileged and blessed to have been through this journey. So thank you very much. And I hope you really like this film. I hope you love this film and watch it repeatedly. I hope. Now I would just like our title guy, Mr. Wazir, to talk. So here's to Mr. Wazir. Very good evening. Good morning, good afternoon to all you lovely people. Vijay, after seeing this promo, I'm actually kind of nervous to talk out here. He's handed over the responsibility of me playing the title role of Wazir. And Vidhu sir, thank you so much. Vijay and I have worked on a film called David before. And after seeing that film, Vidhu sir called me and he said that, Neil, I'd like to meet you. So I went to the office and I met sir. And he said that there's this very important character in the film. He's the antagonist of the film. And after seeing David, I think you'd do a good job. So I said, okay, let me hear it out. So I heard it. And then Vidhu sir and Vijay and I sat in his cabin and he said, how are you going to portray it? And I was blank. I was really blank. I had no idea. And then Vidhu sir just planted the seed of how Wazir should actually be portrayed on screen. And then he went and told me that you have a task, a mammoth task, because you're portraying a character which has to intimidate Mr. Bachchan's character on screen. And I said, I can't do this because how in this world, how can you intimidate somebody whose name and presence itself intimidates you? So, but then I said to myself, my career would be incomplete if I hadn't worked with Mr. Bachchan, with Mr. Vidhu Vinod Chopra, Rajkumar sir, Abhijat, Vijay, Farhan, Javed sir. This association would not have happened if I hadn't said yes at that point. So thank you so much for this opportunity. Thanks Vijay, thank you Farhan, thank you all. And just quickly, pivot. Yeah, hello everybody. I would just like to thank, when I knew that I would be part of this film, I was just counting reasons to be, Vidhu sir, Bachchan sir, Abhijat ji, Farhan. It was like endless. I was like, are there any other reasons also? I would just like to thank Vidhu sir. Right from my childhood, Parinda has been my most influenced film. And I'm sure it has been for so many other people. Same here, sir. So for me, it was like a textbook in filmmaking. Parinda used to watch just to learn stuff. It's still, I have not seen in a film Bombay captured better than that film. I go back to that film and I can just go on talking about it. Thank you very much, sir. Thank you, Abhijat, sir. Farhan, I remember when I met him, we were on the shoot, I told him that Dil Chahta is the only film which I have seen 7 times in theatre. So I was just so excited and thankful. It was so difficult for me to just, perform in front of him when he comes like 110% prepared on set. So I had to be like 200% prepared. So it was so good. And of course, Vijay, thank you, Vijay. I want to thank you. I have not done that now, abhi tak. I want to thank you for making me part of Wazir. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you all. We'll be open to the Q&A. I will request everyone to come on the stage. The one thing that I want to mention here, that the last time we associated with Reliance was in 3 Idiots. We have some people from Reliance here who worked with us on 3 Idiots. And it was just amazing, Arun, Sameer Chopra were here, that it took me back that this is the team
that made the t-shirts for 3 Idiots, and they've done it for Wazir. So thank you so much, Arun, Sameer, whoever here is from Reliance, to one more time, you know, we are associating each other. Come up quickly you can show you, is that Sameer here somewhere? Yeah, there. Okay. So that's Sameer Chopra, who's handling now the marketing from Reliance, and Arun Mehra, who's designed the t-shirt and all of this here. Thank you so much, guys. So we are now open to Q&A, I guess. So you guys sit here, and we are open. Abhijat, you'd probably like to join us. Yes. ये शतरंज का खेल आपने खेला है, इस फिल्म के लिए आपको खास तौर से इसमें काफी प्लान करना पड़ा होगा? नहीं, मैंने खेल खेला है बचपन में। एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ, तो हमेशा कहीं ना कहीं एक चेस बोर्ड कमरे में पड़ा रहता था। तो वी आर मोर फैसिनेटेड बाय द फिगर्स एक्चुअली देन द गेम इटसेल्फ टू स्टार्ट विद, यू नो। तो कभी कभी इमेजिनरी गेम्स उस पर बन जाते थे अलग अलग किस्म के, बट एज यू लर्न, सो दिस इज समथिंग आई हैव डन फॉर क्वाइट अ व्हाइल। मतलब कई सालों से मैं कोई ज़्यादा कोई चैम्पियन नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई नो हाउ टू प्ले द गेम, और आई विल गिव अ वेरी गुड फाइट बिफोर आई डू गो डाउन फाइटिंग। नील, आपसे सवाल मेरा है कि एक पावरफुल हीरो के लिए एक पावरफुल विलन होना भी काफी जरूरी होता है उसके सामने, तो अपने किरदार के लिए उस पावरफुल इंसान के लिए आप टाइटल दिए हैं इससे, उसके लिए क्या मशक्कत की, कुछ खास एक्स्ट्रा किया आपने? क्योंकि फ्रंट में फरहान भी थे, पंडित जी भी थे। पहली बात तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, और जिस किस्म की कहानी है, और क्योंकि खेल के ऊपर है, तो सारे जो मोहरे हैं यहाँ पे एक किस्म से बहुत ही दिलचस्प किस्म के कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में। तो जाहिर सी बात है कि जब मुझे बिजॉय और विदु सर ने इस कैरेक्टर के बारे में कहा, तो काफ़ी सवाल जवाब उठे दिमाग में कि इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कैसे किया जाए, और ख़ास तौर पे एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म का है, नेचर में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और क्योंकि इंटिमिडेट करना है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर है, तो कहीं पे भी मुश्किल बात ये थी कि कैरेक्टर को लिखा ऐसा गया है कि कभी कभी कैरिकेचरिश हो सकता था। तो मेरा बस कंट्रीब्यूशन इतना ही था बिजॉय के साथ, और अमित सर यहाँ पे आज है नहीं, अमित जी, उनके साथ, कि इस कैरेक्टर को कैरिकेचरिश कैसे ना बनाएं, और जितना इसे डरावना बनाएं उतना ज़्यादा इसका जो डर है फिल्म में रहेगा आपके साथ। जी। He was here for the first trailer launch, if you remember, and he has some shoot, and this for me today's event was really dedicated to Javed Saab and to the writers, and we are talking about really the writing, and he's here with us in spirit. It's not a big thing for me. I'm sure if he could, he would have definitely been here today, but sadly because of his shoot schedules. TV का show चल रहा है कुछ, so he's there, but that's understandable. So Wazir was postponed to Jan. So how true is that, sir? And what was the reason for the postponement of this film? See, there are two reasons. First of all, the special effects that we are doing on Bachchan Saab's legs, I was not happy with that. See, I never want to make a film and release it in a bhash. A lot of people do that. I was just telling Arun Mehra outside that if we have more time, we can do a better film. Rohit is here somewhere. Rohit Kulkarni is doing the background. We can just raise his hand if he's somewhere here. He's doing a great job, but we are taking time over every reel. So I'm not the kind of guy, whether, if you remember PK, we delayed by 6 months. We were supposed to come in June, we went to December. Why did we do that? Not because we were saying, acha, June mein koi aur film aa rahi, because we thought we'd need time. So we needed time, and I'm very glad that we went a month. I think we'll be ready, the film will be ready by 15th December or so, 15th, 20th, we'll be ready. So if we had to release on 4th, we would have that crunch. I still don't know how people are still shooting and they release their films. And I think somewhere वो film पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इतने pressure में जब film बनती है, तो कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है. We like to make our films आराम से, with love, and release it with love. So that's why 8 Jan is, we'll be ready in December, but 8 Jan is when we release. The question to you is, Mr. Bachchan is known for, for his humor. On screen तो आप दोनों के बीच में बहुत ही seriousness दिखाई दे रही, but off screen कुछ ऐसे कुछ केस हुए थे आपके और Mr. Bachchan के बीच में जहाँ मतलब कुछ मजाक मस्ती हुई हो, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, this is the best place to talk about it. बोलिए सर. नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेट पे, मगर वो चीज़ें सेट पे ही रहती हैं. अगर
कुछ शेयर करना है जो उन्होंने मुझसे कहा है, आई वुड लीव इट अप टू हिम टू शेयर. आई डोंट थिंक इट्स इन माई प्लेस. मतलब मैं जेन्युइनली आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे उनके साथ इतना वक्त बिताने का मौका मिला. हम सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनकी फिल्में देख देख कर हम बड़े हुए हैं. दैट्स इंस्पायर्ड अस ऑल्सो टू बी इन फिल्म. So just to sit with him, listen to him. I spoke to him a lot about the past, about him approaching other roles, about his association, of course, with Salim Saab and with my father, how they worked together. So my interest really lay there in a lot of conversations, and we spoke a lot. मतलब बहुत वक्त हमने दीवार के बारे में बात की. मतलब जब हम मिलते थे बहुत सारी conversations दीवार को लेकर हम दोनों ने की. मगर उस और of course he is very very witty, he is very funny, और हमेशा कहीं ना कहीं एक हंसी मजाक का मोमेंट होता था. But those are private things. 80s and 80s को considered as the golden era of Bollywood, और इन दोनों के पीछे मतलब बहुत बड़ा contribution है सलीम साहब और जावेद साहब जी. तो as a director आप कितना इस बात को कितना मिस करते हैं कि आज सलीम साहब और जावेद साहब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब you are blessed with अभिजात sir and Rajkumar sir, but how much do you miss that Bollywood needs Salim and Javed साहब to come again? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. ये आज जो हमने कहा कि इट्स अबाउट द राइटर्स एंड जावेद साहब वाज काइंड इनफ टू कम, क्यों हम कह रहे हैं? अब जब आप वजीर देखेंगे आपको पता चलेगा. आपने पीके देखी होगी, 3 Idiots, आपको पता चलेगा कि जो राइटर हैं असल में वही फिल्म बनाते. अगर आप इनके सलीम जावेद साहब की कोई भी फिल्म ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, एक एक डायलॉग, एक एक चीज आपको याद है. आज क्या याद है मैं बताता हूं आपको क्या याद है. फ्राइडे को कितना कलेक्शन हुआ? संडे को ड्रॉप हो गया क्या? तो नहीं चली. कहां से कहां पहुंच गए हम लोग. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज है और जावेद साहब ने इतनी कमाल की नज्म पढ़ी है. इसका मतलब है कि कहीं सिनेमा आर्ट है. हम नहीं कहते बोरिंग, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है. आप देखिएगा वजीर, बहुत मजा आएगा आपको. मैं बुरी तरह कुछ बोलने वाला था, फिर मैंने सोचा प्रेस है तो मैं बोल नहीं रहा हूं, पर बिल्कुल हाथ में आ जाएगा. आप देखिएगा. क्यों आएगा? क्योंकि 4 साल हमने लिखी कहानी, 4-5 साल. आज यू नो व्हाट यू सेड फरहान ने जो कहा, इट रियली मूव्ड मी. और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि लक्ष्य के फर्स्ट हाफ की तारीफ की थी और सेकंड हाफ की बुराई की थी. माफ कीजिएगा, मैं बोल देता हूं. मुझे निकलने से पहले घर से बीवी ट्रेन करके भेजती कि किसी की बुराई मत करना. लेकिन आपने एक चीज शायद नोटिस नहीं की, 10 साल पहले फरहान ने ये पढ़ी थी. मैंने कहा था कहानी सुनो. एक और बात बताता हूं जो फरहान साहब ने बताई नहीं है. जब फरहान ने यस बोल दिया तो उन दिनों जावेद साहब और मेरा बहुत चल रहा था. तो मैंने कहा यार ये कैसे इसने यस बोल दिया? जावेद साहब आपको बताई नहीं बात. तो फरहान आया, मैंने कहा यार तूने यस कैसे बोल दिया? मैं तो बहुत खराब आदमी हूं. बोला आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है क्या? तो आप पढ़िए, आपको भी मैं झेल लूंगा, कहानी इतनी अच्छी है. तो सर कहानी इनको हम इतना मिस करते हैं कि आज के जमाने में कहां है वो. बहुत जरूरी है इनका होना. तो आई रियली जावेद साहब एक एक कहानी आप लीजिए. तो आई रियली मिस गुड राइटिंग. My question is to round of applause. Thank you. My question is to Neil, Farhan, and Aditi. The movie is revolving around chess. What is the one chess piece that each of you, with respect to your characters, relates to the most after doing this movie? I think मेरा जवाब बहुत ही सिंपल है. I think जो टाइटल रोल है मेरा वजीर का, I think it's the best character. I personally also feel myself as an actor who's, easily moldable. So I've tried this very hard in my career, from Johnny Gaddar till Wazir, that I don't stick to a particular genre, and I don't, kill my talent in the process of trying very hard to sell something else but my talent. So that's what I'm trying to do, and I'm glad that I have the character of Wazir to, who can slither anywhere. Yeah. Well, the Begum, because without the Begum, the Bachchan has no anchor, and the Bachchan is vulnerable. बाकी के सारे pieces मैं ले लेता हूँ. No, I mean, if at all, I've never really thought about this, to be honest with you. But if at all it had to be anything, I'd probably just see myself as the Pagal Hathi, I guess. Because I think that kind of focus to do something good is very, very important. And anything we get into, I think what is asked of you,
most importantly, is your time and your honesty and your sincerity. And I think that's all that we can offer as actors, to a director and to a producer, is to be straight up with them and to be honest and give it our best shot, and to lose ourselves in that and be so focused that nothing else really matters at that point. So I think I see myself as that. In a real life chess game, have you defeated Panditji? No, we haven't actually really had a real life chess game yet, but I'm sure we'll have many to come. And I've also learned, he also plays really well, so I'm hoping that at some point, hopefully, I can beat him in one game at least. Thank you. Talking about your recent films. एक अलग ही शेड नजर आ रहा है लोगों को आपका, नेगेटिव कैरेक्टर्स. जॉनी गद्दार से लेके आज तक आई थिंक सात खून माफ ने भी वही देखा था. जॉनी गद्दार में वो था, प्लेयर्स में था, कत्थी जाके एक साउथ फिल्म की थी जिसमें वो शेड था. तो मेरे ख्याल से कोई भी कहानी जो है जिसमें हीरो और विलन का जिक्र होता है, उसमें कहानी बिना विलन के कंप्लीट तो होती नहीं और हीरो बिना विलन के तो होता ही नहीं. तो उस बैलेंस को अगर आप अपने आप को अगर उस तरीके से तोलें तो अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए वो बैलेंस का फैक्टर आप बनते हैं. तो एज एन एक्टर आई एम जस्ट ट्राइंग to make sure that I cater to my directors and my audience out here as an actor, as a performer, who's not shy, like I said earlier also, that I'm not shy of playing antagonist or protagonist. So, and I kind of try and maintain a very human element to all the characters, a little bit of a emotional connect with each of them, that y'all can relate to. So, yeah, let's hope for a little bit more of a lot more shades coming in. Yeah. बहुत सारा एक्शन था इस फिल्म में और आई थिंक आपके लिए पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है. तो ये मुश्किल था और इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा एक्शन स्टार है जिसको आप काफी पसंद करते हैं? मैं नहीं कह सकता कि कोई एक स्टार है जिसमें, मतलब सभी बहुत सारे एक्शन हीरोज हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा काम किया है सब ने. ये पहली बार मुझे मौका मिला है टू डू एक्शन इन अ फिल्म. मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ डॉन में, ऑफ कोर्स लक्ष्य में. तो कहीं एक जानकारी थी और एक नॉलेज था कि कैसे होता है सब कुछ, क्या एफर्ट करना पड़ता है, सारी टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं, और कौन से कैमरा एंगल्स अच्छे लगते हैं एक्शन में, क्योंकि दैट कैन मेक इट मोर इफेक्टिव एज वेल. तो ये सारी जानकारी थी और आई हैड अ वंडरफुल टाइम टू डू एक्शन. मतलब इसमें काफ़ी चेसेस हैं, शूट आउट्स हैं, हाथापाई है, तो बहुत भड़ास मैंने निकाली सालों की इस फिल्म में शूट करते वक्त. तो आई had a great time doing it, and there's many action stars. It's not fair to take one person's name. I have to tell you a little joke. When I saw the film, खत्म हो गया तो मुझे वो प्रभात कहते हैं हमारे पीआर के कि बहुत अच्छा एक्शन किया है. मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा. मैंने कुछ भाव नहीं दिया. तो फिर वो मुझे कहता है सर फर्स्ट टाइम किया. मैंने कहा नहीं यार फर्स्ट टाइम थोड़ी किया, बहुत किया है इसने. So then he made me realize कि ये फरहान अख्तर की पहली एक्शन फिल्म है. और मैं ओपनली इनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि जो मैंने देखा, जो आपने ट्रेलर में देखा, यकीन नहीं होता है कि ये इनकी फर्स्ट एक्शन फिल्म है. बिल्कुल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऐसा लगता है कि एक्शन हीरो चाहे मुक्का मार रहा है या गन पकड़ रहा है या जो भी कर रहा है. इमोशनल सीन तो खैर जो है सो है. एक्शन यू हैव डन सो वेल फरहान दैट इट्स अनबिलीवेबल दैट दिस इज योर फर्स्ट एक्शन फिल्म. सो थैंक यू सो मच. You mentioned Dawn. A lot of fans are eagerly waiting Dawn. When will we get to see you directed again with the same star cast? After Wazir release, I'll have to direct it once to direct it again. So, but I don't have a plan yet. I've always maintained that I enjoy that character tremendously. I think he's a very, very exciting character to write for, and I've had a tremendous time working with Shah Rukh as that character. So hopefully something will come along, but I really don't have a plan. So if it happens, it will be the same star cast, right? Shah Rukh. I don't know why we have to keep digging deeper and deeper. When I'm telling you I don't have a script, it's very difficult for me to tell you who will be in it. Dawn will definitely be in it, because Dawn is the character. But apart from that, I don't know. It will depend on what characters are written in and what's there. Vidusha just said that he has the script since 10 years. So how did you come on board for the film? Yeah, for you. For me? Yeah. I was called after David. After he had seen David and he called to meet me, and we met, and we both started working on one script first. And
that script was kind of, we worked on it for 5 to 6 months and it didn't really pan out well. And I was actually going to his office to say, thank you for the opportunity, sir, but maybe we'll work on something else together. And on the day that I went to say goodbye is when he just opened his vault, and there was this bag of ideas. There was like some 7-8 scripts lying there, and he just gave me all of them and told me to read them and asked me if there is something that I'll like in it, that to direct. And from all the scripts, though all of them were really good, the one I really liked was the fifth move, which finally became Wazir. So that's how the journey started. I mean, and he actually handed it over to me on a platter. So, and from there on, it's been a tremendous ride. That's how the whole thing started. There were reports that in Raees you will be seen as a cop. But since you are playing a cop in this film, was that one of the reasons why you didn't want to repeat yourself? Yeah, yes, absolutely. When I was doing Wazir and then Raees was actually supposed to happen at a very different time. But since it got changed and it happened to be the very next experience, it's not even about not wanting to play a police officer again. It's not wanting to do it immediately in my next experience as a film. So it would have been the next thing that I shot for. And I was a bit uncomfortable with that. I felt that, on some level, of course, they're completely different trajectories of what's happening in the film. But you're more or less playing the same kind of character. Your foundation is the same. And I didn't want to repeat that. So, which is why I felt I should opt out of that film. And it's fantastic because we have Nawaz Uddin who's playing that character. He's a fantastic actor. So, we're all looking forward to it. हर किरदार इस फिल्म में इंटेंस है, तो आपका भी किरदार क्या इंटेंस नजर आएगा या कुछ और? खूनी ये है। मुझे आप देखिए ये जो terms है ना, उससे I don't understand these terms because it limits whatever it is that you're doing. And what happens is हम बोल देते हैं लेकिन वो फिर वही हो जाता है, एक बॉक्स में फिट हो जाता है और वो ताला बंद करके हम लोग फेंक देते हैं, इंटेंस है या सैड है या हैप्पी है या बबली है. So I don't want to get into that. It's a film and it's a story and every character has a journey in the film. So I think that is more important rather than what exactly it is. बहुत रोमांस है फिल्म में. देखिए गाने अभी रिलीज करेंगे हम लोग. बहुत अच्छे गाने हैं, मैंने लिखे हैं, आप देखना. Have you ever faced any such problems at the beginning of your career, and what do you think should the industry do to rectify this problem? I think writers themselves have a lot to do with, there is a competence issue as well, So I think it's a complicated question. You just can't say that, I deserve to be famous. You need to deliver for a long time. Having said that, the problem exists. You know the names of playwrights. You don't know the names of screenwriters. 20 playwrights have won the Nobel Prize in 100 years of cinema. Not one screenwriter has even been nominated. Not even Cesar Zavattini, the father of neo-realist cinema. Javed Saab himself and Salim Saab, I think through the consistency of the work and the genius of the work, were able to break through and break these shackles. And he has done a lot to educate the public about this problem. So for the first time I heard about Mr. Wazahat Mirza, who had written Mother India and Mughal-e-Azam from Javed Saab's mouth, and I felt ignorant that I didn't know this gentleman's name. Or he had the capacity to educate India that Mr. Anand Bakshi's songs are no less than the mightiest of the mighty poets. They have the same kind of literary merit, but just because he happens to write for cinema, he would not get his due. So I think the problem exists, but I think the only solution is to go on creating to the best of your ability, and that's the only thing that they have been able to prove, that if you do it consistently enough, long enough, then people have to, they have no option but to notice the writer. Because what was the thought process behind casting John he just fit the part, yeah. And in fact, it's not like, we even made he was part of our wish list, and we thought he'll be
In fact, we were just actually taking a chance in the sense, because it was a special appearance. So I was not really sure whether he would want to be part of it. So I first bounced it up with Vinod sir. Vinod sir said, why not just pick up the phone and ask him. And it was as simple as that. And he was actually excited about, even though it was a special appearance, he was quite excited to be part of it. So it was as simple as that. He just fit the role to the T, I felt. See, John and me traveled to Los Angeles together in the same plane, and we talked about the script. I told him what my idea was. And at that time, of course, we didn't talk about the role. But he was kind enough, and I need to thank him publicly. When we approached him, he immediately said yes, and he came and did his bit. So we are very grateful to him. तो ये काफी different concept पर है, तो किस तरह से आप promote करेंगे इस फिल्म को? क्या concept सोचा है आपने? देखिए, दो चीज़ें हैं जो इस फिल्म में बहुत बाकी फिल्मों से बहुत अलग हैं। एक तो इस फिल्म की कहानी जो है, वो जैसा अभिजात ने आपसे कहा, हमने 5 साल ये कहानी लिखी है, और उसके बाद जब बिजॉय और ये राइटर्स आए तो इनको लगा कि कहानी रेडी है, अप्रैल में शूट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 2 साल और लिखते रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिजॉय, हाउ मेनी इयर्स वी रोट द हिंदी वर्जन? ऑलमोस्ट 2 years. 2 साल। तो ये कहानी लिखने में हमको 5 और 2 अगर पकड़ेंगे तो इतने साल लगे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है इस फिल्म की, कि ये बहुत अच्छी आपको लगेगी कहानी। और दूसरा मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जब मैंने फिल्म देखी थी और मैंने देखा कि फरहान का पहला एक्शन रोल है और इसने किया है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और तीसरा, जो फरहान और अमिताभ बच्चन जो हैं, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत कमाल के एक्टर्स हैं। तो इन दोनों को साथ में देखना, अगर मैंने ये फिल्म ना भी बनाई होती तो मैं इन दोनों को साथ में देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये फिल्म देखता। सर, आप लोगों ने हमेशा फिल्में एक जैसे मुन्ना भाई बनाई, पीके बनाई, तो ये फिल्म क्या कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आने वाली फिल्म है आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए? आपने परिंदा नहीं देखी थी? परिंदा की बात हो रही थी, वो भी तो इसी प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी भाई साहब। और एक फिल्म जो आप किसी ने नहीं देखी, उसका नाम है ब्रोकन हॉर्सेस, सिर्फ ऋतिक रोशन ने देखी है, वो भी देख लीजिए। हम बहुत कुछ अलग अलग करते हैं। परिणीता भी बनाई थी हमने, फरारी की सवारी, 1942 लव स्टोरी। जो बनाते अच्छा बनाते, और हमारी दुकान में खाली एक चीज नहीं पकती है, पकाने वाले आपको पता है। You know, the first film that Vinod, that I had the privilege to see Vinod's film was a film called Khamosh, and it was a beautiful suspense thriller. And when I used to hear this, that ये किसी फिल्म की कॉपी है, मतलब इतना लो सेल्फ एस्टीम अपना कि हर किसी को यही लगता था कि कहानी इतनी अच्छी है और सस्पेंस थ्रिलर है तो ज़रूर वो कोई चोरी की कहानी होगी। So I remember that when I asked Vinod, he was so annoyed that we were on the terrace and he said, "Acha, how about that moon? Is that also fake, or do you think that's original?" I mean, for many minutes he kept ragging me about that, about just the audacity of the question, that if it was taken from somewhere, I would have acknowledged that. So clearly from that time onwards there was this bent in him. I think thriller is his greatest forte. So and he educated me on that genre. And when he handed the reins to Bijoy, he had the conviction that he is one of the finest visualizers in the country, and he was confident that he will be able to deliver. So I'm going to make a claim here that this film probably eclipses Khamosh, and it becomes probably the finest suspense thriller that this country has seen yet. अब एंड में सिर्फ इतना बताऊंगा कि जब मुन्ना भाई MBBS हमने बनाई थी तो मुझे क्लियरली याद आया कि ये राजकुमार हिरानी तब राजू होते थे। ऐसे ही हम बैठे थे तो हमको लोगों ने कहा कि भैया आप तो थ्रिलर बनाते हैं, कि कॉमेडी आपने कैसे बना ली है? तो भाई साहब, हम बहुत कुछ अलग अलग हमने बहुत कुछ किया है। और सिर्फ एक बात है कि जो भी हमने बनाया, चाहे 3 Idiots हो, चाहे PK हो, चाहे 1942 हो, वजीर हो, खामोश हो, हमने अपनी तरफ से बेस्ट काम किया। क्योंकि जब हम छोटे थे गांव में तो हमारे फादर ने हमसे कहा था कि तुम गली के मोची बन जाना, लेकिन गली के बेस्ट मोची बन। तो हम अपनी कोशिश में है कि हम इस गली के बेस्ट मोची बन जाए। थैंक यू। Your inspirations and about scripts and about film, and you also called the writers of the film. Do you think we kind of lack talking about films, talking about the art of films, talking about writers, editors, and also the other people who are involved in making of the film? देखिए, जनरली
आज तो फिर भी कुछ ठीक ठाक सवाल हुए हैं। जनरली लोग पूछते हैं कि फरहान किसके साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा? शिलोंग में क्या कर रहे थे भाई? डॉन में किसको, प्रियंका को ले रहे हो कि दीपिका को ले रहे हो? अरे वजीर फिल्म की बात करो यार तुम लोग। 5 साल बन के हमने मेहनत करके फिल्म बनाई है, तो आप अपने सवालों को भी देखिए कि ये क्या सवाल है। अब बेहुदा कहेंगे तो प्रेस है वो बोलेगी तो बेहुदा बोल दिया यार, शट अप बोल दिया यार, शट अप शट अप शट अप, छप जाएगा हर जगह। हाँ बिल्कुल, जब ऐसा कोई सवाल पूछता है कि डॉन कब बनाएगा, अच्छा उसमें हीरो कौन है, तो दिल तो शट अप ही करता है। हम बोलते नहीं, हमारी शराफत है। अरे 10 साल लगे यार वजीर बनाने में, 5 साल लिखने में लगे, 2.5 साल हिंदी लिखा। उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि हम अमिताभ बच्चन के घर में बैठ के हमने 8 दिन रिहर्सल की है फिल्म की। इस बारे में आप सवाल पूछिए कैसे हुआ? शूटिंग थी, हमने कैंसिल कर दी क्योंकि बच्चन साहब रेडी नहीं थे, फरहान साहब रेडी नहीं थे, डायरेक्टर रेडी था कल शूटिंग करने, मैंने वाला नहीं। तो बच्चन एंग्री हो गया कि यार तू तो शूटिंग कैंसिल कर रहा है। मैंने कहा हाँ मेरे पास डेट है, मैं रिहर्सल करूंगा। पहले दिन हमने मैरियट होटल में रिहर्सल की, यू रिमेंबर। दूसरे दिन अमित को प्यार आया, उसने घर पे बुलाया, खाना खिलाया। 8 दिन हम लोग एक टेबल पे बैठ के, सारे एक्टर बैठ के हमने रिहर्सल की है। आज तक हुआ नहीं है ये बात। ये तो आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये बात तो कोई पूछता ही नहीं है। तो कैसे हुई ये फिल्म, कैसे बनी, एक एक नुएंसेस, क्योंकि मैं सेट पे नहीं जाता हूं। और ये पहली फिल्म है जो मैंने और अभिजात ने एडिट की है। परिंदा के बाद ये पहली फिल्म हमने एडिट की, हमने कुछ एडिट नहीं किया था। ये बात आप पूछें तो मैं जवाब दूंगा ना। आप कहां फंसे हुए, कौन है वो बेचारा कह रहा है यार लिखूंगा। तो आप जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। Me? The release is the first highlight. The appreciation is the second highlight. And the success is the third. These are the 3 highlights I'm looking forward to. Thank on you. the 8th of January. Thank you very much everybody. Thank you.